क्रोमोसोम नंबर कोता छुस पत वुछो यह कत सत जरूरत अम पत वुछो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर क्या अत स्ट्रक्चरस मज कत सत जरूरत पत वुछो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दीज क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियासिस ये मियासिस गसा तम साथ क्या बिहेवियर रोजान अम पत क्या करो यह कर कंपेयर ऑलरेडी नून ऑर्गेनिज्मन सम पत परोस बायोकेमिस्ट्री यानी अमिच केमिकल कंपोजिशन क्या यह कमन कॉन्स्टिट्यूएंटन हुंद बनियामुत यह बनियामुत अमाइनो एसिडन हुंद अगर यह अमाइनो एसिडन हुंद बनियामुत तमिक मतलब इट इज प्रोटीन रिच अगर यह प्रोटीन रिच तेल थवन तमन ऑर्गेनिज्मन मज प्रोटीन रिच मिसाल के तौर पर प्लांटन मज वुचान ये प्रोटीन रिच प्रोटीन कमर मज दालन मज यानी अगर अत मज प्रोटीन ज्यादा तेल थवन यह दालन मज अगर अत मज कार्बोहाइड्रेट ज्यादा तेल क्या करो तेल थवो सीरियलन मज अगर अत मज बे विटामिन ज्यादा तेल थवन कुछ सब्जी मज या कुछ फ्रूटस मज अकॉर्डिंगली दैट इज द बायोकेमिस्ट्री यानी वी विल स्टडी इट्स केमिकल कंपोजिशन अत मज कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा अत मज फैट कंटेंट ज्यादा अत मज प्रोटीन कंटेंट ज्यादा अत मज इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट ज्यादा तादाद में मौजूद अत मज विटामिन मौजूद अकॉर्डिंगली व्हेन वी स्टडी all these branches यानी यमई त्रे चोर छन के मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री यो छन के we will study its ecology we will study its physiology में वुचो न्यूट्रिशन यह ऑटोट्रॉफिक यह हेटेरोट्रॉफिक यह पैरासिटिक यह सेप्रोफिटिक यह सिम्बायोटिक इथा कन वुचो इंसान रेस्पिरेशन कित कन करा यह ऑक्सीजन निमा अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर निमा यह गिल रेस्पिरेशन करा यह क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करा यह लंग रेस्पिरेशन करा अकॉर्डिंगली वी विल कंपेयर दिस रेस्पिरेशन विद अदर नून ऑलरेडी नून ऑर्गेनिजम्स इथा कन करो अम्स एक्सक्रेशन इथा कन करो अम्स मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स वी स्टडी अल्टीमेटली हकोन यह ऑर्गेनिज्म तथ ग्रुपस मज थयित तथ कैटेगरी मज थयित ये शुब यानी ये अम सज पोजिशन अप्रोप्रिएट तो एक्यूरेट आस दिस इज द मेन एम ऑफ सिस्टमैटिक्स यानी इन शॉर्ट वी कैन से द सिस्टमैटिक्स it has been derived from a Latin word systema which means to arrange or to order. In short we can say the systematic arrangement of living organisms is called systematics. Now the term systematics, it was coined by Carolus Linnaeus in 1751. Now we will define the systematics. The systematics is a branch of biology which deals with the study of kinds, diversity and relationships of living organisms based on the comparative study of their morphology, anatomy, cytology, biochemistry, etc. This is the definition of systematics. Now we will take other aspect of systematics. This systematics, it is a science. Science means it is the study. It is the study which is connected with four things. This systematics, it is a science which is connected with four things. What are these four things? We will write down. It is a science connected with description, identification, nomenclature and classification of living organisms, classifications of living organisms, classifications of living organisms based on the unique properties of every species and groups of species at all the levels of classification, at all the levels of classification. यानी in short अस वनो इत कन बुक करो अस थोड़ा खोलुन अस परुन थोड़ा डिटेल ये सिस्टमैटिक्स गाय क्या अत मज क्या चीज तो दिस सिस्टमैटिक्स यह मोमूद लकट टर्म के बल्कि इट इज अ साइंस, इट इज अ बिग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which involves description in other words it is also defined as characterization. At is characterization one yes it is a science which involves description, that is characterization. What do we mean by description or characterization?
Simply means first we describe a living organism. We study various aspects of a living organism. That process, where we study the various aspects of a living organism, that is called description. Yeah, that is called characterization. Description or characterization. That means first we study the habitat of a living organism, where it lives. यह आबस मज रोजा, यह खुशकस मज रोजा, यह जंगलस मज रोजा, यह मोदानस मज रोजा, यह डेजर्ट्स मज रोजा. Number first. Then we will study its morphology. Whether it is a tree, it is a herb, it is a shrub, it is an animal, it is a biennial, it is a perennial. इथा कने एम पत पारो इन से मुख्तलिफ फीचर्स. यह फ्लावरिंग प्लांट, यह नॉन फ्लावरिंग प्लांट. इथा कने पत पारोस मुख्तलिफ फीचर्स. एम सन्स फिजियोलॉजी पारो, एम सन्स इकोलॉजी पारो, एम सन्स जेनेटिक्स पारो, एम सन्स बायोकेमिस्ट्री पारो. यानी तुम सारी चीज ये पारो अस वनान डिस्क्रिप्शन. यानी वी डिस्क्राइब ए प्लांट, वी डिस्क्राइब एन एनिमल, वी डिस्क्राइब ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट मीन्स सिस्टमैटिक्स पारन खतर गोडनिक चीज वी हैव टू डिस्क्राइब ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. युस लिविंग ऑर्गेनिज्म अस स्टडी करुन युस लिविंग ऑर्गेनिज्म अस स्टडी करुन वी हैव टू डिस्क्राइब दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म. येलि अस डिस्क्राइब करुन एम पत वातो अस दोयम स्टेपस पे, दैट इज आइडेंटिफिकेशन. येलि अस स्टडी ये करुन, येलि अस एमसन फीचर्स वुचो, अस हको आइडेंटिफाई करिस, अस हको वनित यह कुस लिविंग ऑर्गेनिज्म छ. यह कत सत थाउन, यह एक्वेटिक, यह टेरेस्ट्रियल, यह प्लांट, यह एनिमल, यह ऑटोट्रॉफ, यह हेटेरोट्रॉफ. इथा कने वो मुख्तलिफ चीज बाकी चीज अम सत. यानी वी विल स्टडी ओतन वन वो यह प्रोटीन रिच, यह कार्बोहाइड्रेट रिच, यह फैट रिच, अत मह विटामिनस, अत मह मिनरल्स, अत मज कम चीज अत बुनियाद पे डिस्क्रिप्शन किस बुनियाद पे वी विल आइडेंटिफाई इट. यानी वी विल डिटरमाइन इट्स प्रॉपर पोजिशन in a particular system of classification. Identification means to determine the exact position of a living organism. What do you mean identification? We mean identification by to determine, to locate the position, proper position of a living organism in a particular system of classification. Us wucho em sens position kya ch? Us wucho em sens position kya ch? Ye kata thaun, ye thauna kingdom level pe, ये थावना डिवीजन लेवल पे, ये थावना क्लास लेवल पे, ये थावना क्या है बस वन बेस्ड ऑन द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी स्पीशीज एंड ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज. we will compare it study based on the unique properties of every species. तो प्रत कुन स्पीशीज पन यूनिक प्रॉपर्टीज आसा, इथा कन पन प्रत कुन ग्रुपस पन कुन यूनिक प्रॉपर्टीज आसा. मिसाल के तौर पर ह्यूमन बीइंग पन प्रॉपर्टीज, मगर ह्यूमन बीइंग अके क्लासुक हिस्स दैट इज मैमेलिया. मैमलन पन यूनिक फीचर्स, इंसान पन फीचर्स. When we study a particular living organism, first we will compare it study with a living organism. मिसाल के तौर पर इंसान से अस वुचन छ इंसान से जोरा. अगर इंसान से जोरा अस थाउन इंसान स्पीशीज मत या इंसान जीन्स मत. अगर वो ये अमकिस क्लास से मैमेलिया से जोरा तेल थाउन मैमेलिया मत. अगर ये अम होर कुन ओस जोरा डिवीजन से तेल थाउन डिवीजन मत. अगर ये किंगडम अलग ओस या मिसाल के इंसान 5 किंगडम पारना आय अत बसा फंजे तम फीचर्स कि यम कुने सरा न प्लांट सरा न एनिमल सरा न प्रोटिस्टा सरा न मुनेरा या अलग किंगडमस मज था. यह कत बुनियाद पे वन बेस्ड ऑन द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी स्पीशीज एंड ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज. एंड इन शॉर्ट वी कैन से फर्स्ट वी डिस्क्राइब ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन वी आइडेंटिफाई इट. यह थवा अकिस ग्रुपस मज प्लांटन मज थावना, एनिमलन मज थावना, मैमलन मज थावना, एम्फेबियन मज थावना, पाइसन मज थावना, एंजियोस्पर्मन मज थावना, जिम्नोस्पर्मन मज थावना, अलगी मज थावना, ब्रायोफाइटास मज थावना, टेरिडोफाइटास मज या डाइकाटस मज थावना, मोनोकाट्स मज थावना. एम पत क्या नॉमेनक्लेचर, एम पत अमिस नाव दिवान. चूंकि व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? दिस नॉमेनक्लेचर सिंपली मीन्स द सिस्टम, बह डिटेल पान, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग distinct and proper names to living organisms. And what do you mean by nomenclature? Nomenclature means the system of, it is a system in biology to give proper and distinct names to living organisms. Used to living organism अमिस दिवान proper नाव.
तो डिस्टिंक्ट नाव. प्रॉपर नाव मतलब क्या गो? प्रॉपर नाव मतलब गो मिसाल के वी विल टेक ह्यूमन बीइंग्स. अगर हसा ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई कोर अख इंसान आइडेंटिफाई कोर अमिस प्रॉपर नाव दिवान. मिसाल के तो अगर ये लड़के अमिस अख कुस्मुक नाव दिवान, अगर ये कोर अमिस बे कुस्मुक नाव. इथा कन प्रथ कस लिविंग ऑर्गेनिज्मस अलग रूल्स आसा नाव दिन तो अकॉर्डिंगली नाव अमिस दिवान. युतु योत कि बल्कि दिस नेम शुड बी प्रॉपर एंड डिस्टिंक्ट. इट शुड on the basis of this name we should distinguish it from other living organisms, and we at the same time we should be able to identify it, we should be able to understand it. अमिस नाव किस बुनियाद पे गो यह कर वनित कि यह हसा फलन ग्रुप सत ताल्लुक थवा, यह हसा फलन फैमिली सत ताल्लुक थवा, यह हसा फलन जनर सत ताल्लुक थवा. अमिस हसा यम फीचर्स यानी नाव तक आसन. दैट मीन्स दिस थर्ड थिंग सिस्टमैटिक्स में गोडनुक चीज डिस्क्रिप्शन, दोम आइडेंटिफिकेशन, त्रेम नॉमेनक्लेचर. यानी डिस्क्रिप्शन तो आइडेंटिफिकेशन पत क्या नाव नाव दिवान. ये अमिस नाव दित नाउ वी आर एबल टू क्लासिफाई इट, now we are able to place it in a particular category. Guys, this classification means that is ordering or grouping of living organisms into various groups. We will place different living organisms into different groups on the basis of correlated characters. Yeah, in short, we can say, in simple words, we can say on the basis of similarities and dissimilarities. On the basis of similarities and dissimilarities. यानी ये ऐसे characterization ती कर, यानी description ती कर, identification ती कर, nomenclature ती कर. इम पत क्या चीज? इम पत इस मुख्तलिफ organism क्या करा क्लासिफिकेशन. ऑर्गेनिज्म अकिस कुन खास ग्रुपस मज थवा कत बुनियाद पे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज. वी सी युस ये ऑर्गेनिज्म ये कमन सज ज्यादा जोरा अस तोला थवा तथ सय कमो निश डिफरेंट के अस दोनों चीज वुचा सिमिलरिटी ते डिसिमिलरिटी. यमन सय अत सिमिलरिटी अस थवा तमने सय, यमन सय अत डिसिमिलरिटी तमो निश अलग थवा. तो चीज बना ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स. यानी यथ सय अत कैरेक्टर्स रलाच यथ ग्रुपस सत या यमिस ऑर्गेनिज्म सत, यमिस स्पीशीज सत, यमिस जीनस सत, यमिस ऑर्डर सत, यमिस फैमिली सत, यथ क्लास सत अथ कैरेक्टर्स जराश वी प्लेस इट इन दैट ऑर्डर, वी प्लेस इट इन दैट ग्रुप, वी प्लेस इट इन दैट कैटेगरी. क्या इथा कन यमन सत जराश तमो निश अलग कड़ा शॉर्टस मज. यानी फोर्थ थिंग इज दैट इज क्लासिफिकेशन. गोडनुक चीज डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, nomenclature एंड क्लासिफिकेशन. ये कत बुनियाद पे करा अत मज क्या ऑफ लिविंग ऑर्गन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गन बेस्ड ऑन द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ इसमें ओतई तय वोन सारी चीज करा डिस्क्रिप्शन ति आइडेंटिफिकेशन ति nomenclature. अल्टीमेटली क्लासिफिकेशन यह करा बेस्ड ऑन द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी स्पीशीज. यानी कंपेयर करा on the base of unique properties of every species and groups of species at all the levels of classification. We study all the levels of classification. क्योंकि तो वुच में levels of classification इसमें वोन levels of classification यानी classification at the kingdom level, classification at the division level, classification at the class level, classification at the order level, classification at the family level, classification at the genus level, and classification at the species level. अस वुचा ये कत सत थावन, ये कत कैटेगरी मज थावन, ये कत कैटेगरी मज थावन. This is the concept of systematics. Now we will see other aspects. This systematics term, it is often used interchangeably with classification and taxonomy. चूंकि युस सिस्टमैटिक यह आम पे इस्तेमाल करा बल्कि वनान युस हसा यह सिस्टमैटिक यह सिमिलर टू क्लासिफिकेशन. इट इज ऑफन यूज्ड interchangeably with classification and taxonomy. साद लफ्जन मज वनो systematics, classification and taxonomy. These are three synonyms. Synonyms. Mine hasa kunu. Simply three different terms, but they are representing the same thing. क्या है? ये लेस पूछो. Three Latin word. तो त्रेनमयन हुंद मायने to order. To order. Yes? Yes? Manas? What's up? Meeting exclude का बजे बजाय कुछ
बजाय 5 मिनट कम का 5 मिनट पे कह तुम छन चलो ठीक है बे गई ना 5 मिनट गड तक थोड़ा कर भी टॉपिक 5 मिनट पे का थोड़ा कर भी कंप्लीट कर ये सोच ना ब्या वो से क्लासिफिकेशन आज गो 5 आज गई ना 5 मिनट गड तक थोड़ा लेट क्लासिफिकेशन तो टैक्सॉनमी बच कर लेट कर Which this systematics it is often used interchangeably with classification taxonomy. यानी सादा लफ्ज़न मज वनो अस हसा छ वनान systematics classification तो taxonomy गो कुन मगर अख taxonomist छ systematist यमस अस वनान G Simpson in 1961 won दोपन classification and taxonomy they are different from systematics. They are not the synonyms of systematic. We cannot use them interchangeably. Balki classification and taxonomy they are different from systematics. Balki they are the parts of systematics. In short, chunki time khayal thayit, I will now cut short it. This classification it simply means ordering of living organisms. Or arranging of living organ into different groups on the basis of their similarities and dissimilarities. On the basis of similarities and dissimilarities. Yus hasa classification ch yasa a subtopic. In short, we can say this classification, according to Simpson, classification is a subtopic of systematics which deals with the ordering of living organisms into different groups on the basis of their similarities and dissimilarities. Classification has a subtopic, and it is Simpson and Jutmut, has a subtopic systematics. यथ मज ऑर्डर अरेंज करा जानदार मुख्तलिफ ग्रुपन मज मुख्तलिफ कैटेगरियन मज कत बुनियाद ऑन द बेस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज तो वो वन बह टैक्सॉनमी क्या कर उस टैक्सॉनमी एक्चुअली इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 Greek words taxis and nomi. Taxis and nomia. This taxis means arrangement and nomia means lawful ya method. And in short we can say it is lawful arrangement ya method of arranging. Method of the labzi mane taxonomy hund lawful arrangement ya method of arranging living organisms. Is kit kan jandar classify kara is kit kan tuman order devan is kit kan tuman arrangement devan so now we will define this taxonomy. This taxonomy it is a branch of biology which deals with the classifications of living organisms. And simply we can say it deals with the classifications of living organisms. Yasa is sub branch yatmas is parach about classifications of living organisms. Chunki mukhtalif yum scientists tamo classify karmit living organisms differently on the basis of different criteria. Kanch nemut habitat, kanch nemut size, kanch nemut nutrition, kanch nemut bay kanch cheez to classify. So us hasa atmas kara different classification and we study the classifications of living organisms. In other words we can say this taxonomy is also defined as the principles and procedures. It is a branch of biology which deals with the principles and procedures of classification. Basic चीज add करा identification and nomenclature. चूँकि taxonomy में त्रे चीज जमा that is classification, identification and nomenclature. यह सच sub branch biology हूँ which deals with the principles and procedures of classification, identification and nomenclature. Shortest mas vano is sub-branch biology hun, yath mas is para principles, criteria, rules and procedures how we classify.
कित कन कत बुनियादस पे क्लासिफाई करान तो कित कन क्लासिफाई करान यानी व्हाट इज द प्रोसीजर व्हाट इज द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन अच वुछा क्लासिफिकेशन योत न आइडेंटिफिकेशन तक पन प्रिंसिपल तो पन क्राइटेरिया पन प्रोसीजर्स तो नॉमेनक्लेचरस तन प्रिंसिपल्स तो पन प्रोसीजर्स यानी वी सी the branch of biology which deals with the study of principles and procedures of classification, identification and nomenclature is called taxonomy. Now, the term taxonomy, it was given by A.P. de Candolle. The term taxonomy, it was given by A.P. de Candolle in 1813. Taxonomy term was coined by A.P. de Candolle in 1813. Now, Carolus Linnaeus is known as the father of taxonomy. Yus hasa Carolus Linnaeus. Emes hasa is wana father of taxonomy. Father of itha kanai asyo tay bozmut Aristotle. Yemis is wana father of biology and zoology. He is known as the founder of this taxonomy. Founder of taxonomy. Because kun such question yaman, because father of taxonomy is Carolus Linnaeus. Kun such question है founder of taxonomy. Achi gasa confusion to father yus yo has founder the. Magar father is Carolus Linnaeus, founder is Aristotle. Founder is Aristotle. Itha karne, because Aristotle is the founder of taxonomy. Aristotle, yemis is wana father of biology to father of zoology. Amar hasa is wana, emis hasa is wana founder of taxonomy. Itha kana ak scientist yus India H. Sentapu. H. Sentapu is known as the Indian father of taxonomy. Indian father of taxonomy. Yani 10 hai naam, 4 hai naam bani. A.P. de Candolle. A.P. de Candolle kor coin kor use this term taxonomy. Carolus Linnaeus is father of taxonomy. Aristotle is founder of taxonomy. H. Sentapu is Indian father of taxonomy. Indian father of समझ आया मान समझ आ न्यूर यामा यानी मैं क्या बोल term this APT क्या जिस confusion का सा ये question चाहिए मान ताच अदला बदल का सा इसके साथ में वुश्त बटकन पता है हमारा मुझे अदला बदल का सा A.P. de Candolle this term Carolus Linnaeus father Aristotle founder H. Sentapu Indian father of चूंकि बकर कंक्लूड मगर ज कथ वन बह ज बे साइंटिस्ट हेको यह प्रोसीड कर टॉपिक क्या जेठ तो चूंकि अस पता थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी मगर ब्याख अक नावा युस वारिया कम आस तक बूझमुत William Roxburgh is the Indian father of botany. यानी इंडिया हो कि उस father of botany से माने that is William Roxburgh. कुछ साथ में ये question क्योंकि general use world father of botany से सिर्फ consider करना Theophrastus. Theophrastus is the father of botany, but William Roxburgh is considered to be the Indian father of botany. Clear? Kहाँ question? क्योंकि बकर आई repeat. क्या repeat करने से ही याद होता मगर time को already तो अगर तो एक question आस कुछ जाए समझ आने की तो त्रिशु में तो बवान. छाका question? Persis sir. तो आई मच कहाँ question? हमारा आवाज से नहीं हुआ कि यस हेलो वनस वनियो वर्ष साहब वनियो मजे
बस वुचा अमन मा कुछ जाए समझ आमुत कि हर्षित साहब टाइम मकलिया मे क्वेश्चन मा कुछ जाए मा आए कत सम कन्फ्यूजन मा गो क्योंकि ये टाइम लिमिटेड करो समझ गवा अगर अम पे तुम बूझू मेरी कत बहुत वन तुम लाइव अगर तुम अम पे क्वेश्चन तुम थो नंबर मून नोट कर तुम हेकू मे कॉल कर तुम हेकू मे पृछित या तान समझ कह अगर तुम इत ठहरु न वनस अम अलाव अगर तुम बे कुन टॉपिकस मज प्रॉब्लम तुम हेकू मे पृछ या यम टॉपिक तुम बासा टफ समझ आमत तुम वनु मे बह पर्ना तम टॉपिक बह लिख नंबर ये पे मोबाइल नंबर तुम हेकू मे कुन त सात यम क्लास अलाव चूंकि टाइम लिमिटेड कह क्वेश्चन ये मकल कर एंड